IGNOU Dost for your IGNOU courses. Myself, Natasha, and already you have done Unit 1. My lecture has been uploaded on Unit 1, so you can have a look to that. Already we have done in Unit 1 the meaning classification of disaster. Now, when it comes to Unit 2, we are going to learn about, this is an important unit, okay? Please try to understand, because होता क्या है ना कि हमारे लिए लिंक करना, एक पेपर के अंदर आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हो आंसर को, then it's difficult for you to write the answer. You know why? Because when you don't link the parts, you won't be able to frame the answers. Right? When the question is asking something related to disaster management and vulnerability, then how would you be able to write the answer over there? You will be able to write an answer when you have studied this Unit 2. In Unit 2, when you have understand the meaning of disaster, when you are understanding how hazard is related to disaster, how risk is related to disaster, and how vulnerability is related to disaster. I hope it's getting very, very clear to you that this is nothing like कि आपके लिए difficult है relate करना चीज को, right? इस चीज को please ध्यान से समझ लो. Nothing is like getting difficult for you to relate. Okay? जब आप units पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके लिए बहुत easy हो जाता है units को cover करना. ठीक है? जो मैं हमेशा से कहती हुए आ रही हूँ कि अब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं. हम प्रॉपर पढ़ने से पहले विल बी ऑलवेज लुकिंग इनटू टेबल ऑफ कंटेंट. व्हाई विल बी लुकिंग इनटू दैट? बिकॉज बिफोर गोइंग इनटू अ फुल यूनिट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस यूनिट के अंदर हम कवर क्या क्या करने वाले हैं और हर एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं. ठीक है? क्योंकि सब टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग आंसर ऑन अंडरस्टैंडिंग रिस्क, then how would you be able to write a big answer when you don't know कि इसके अंदर लिखना क्या है? You can give answer writing is very, very important, right? So it is very important for you to, when you're writing an answer writing, you should consider always, okay? When you're writing an answer, you should know that, yeah, I have to write an understanding risk. I have to write the introduction, that what is risk, what it is related to disaster management, giving few examples. Then we are going into the risk assessments. Then what are risk assessments? How they has been, what are their evolutions of risk assessments? Then risk prescriptions. What are the prescriptions we have? Then we have risk identifications. What are the identifications of risk? How has been, we would be able to identify the risk, and how risk is relatable to disaster. That's very, very important for us to understand. Right? Risk is very different. We cannot call anything a disaster until and unless, that has happened or led to a disaster. The chemical example, which has been, you will be learning in this unit. A chemical example, I think I have given in the previous unit also, a chemical example where there is a chemical factory in the Delhi city. If it's between the city, if there is some kind of risk in that, you will be able to understand that, yeah, that's a risky place. That's a risky chemical factory, right? That's a risk. But until and unless that big thing doesn't happen, it won't come to a disaster. वो disaster में convert नहीं होगा, और disaster में convert होगा तो we have that hazards also. राइट? सो ये एक कनेक्शन आपको इस ही यूनिट के अंदर मिलेगा, किस तरीके से हजार्ड, रिस्क एंड वर्नरेबिलिटी आर कनेक्टेड. वर्नरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. डोंट स्किप दिस टॉपिक. ओके? Vulnerability will not only give you a deep understanding of disasters part, but also it's a very, very, chances of, if you look into the previous questions here, if you look into the questions and all, it would be very, very, common in the exams that this part has come up. Okay, now let us look into the unit. Let's go further. Table of content. When you look into the table of content, you would be able to see that what we are going to cover. अभी हम table of content में क्या cover करने वाले हैं. देखते. Introduction is there. Understanding hazards is there. Then understanding risk is there. Understanding risk के अंदर there are three things: risk assessments and evaluation, risk prescriptions, and then risk identification. Okay. Then understanding vulnerability.
We'll be understanding in vulnerability identification, types of vulnerability, and then it would be a different topic of vulnerability and risk assessment. Then there would be a different topic of vulnerability factors. You can see इस यूनिट पे ज्यादा थोड़ा सा जो यूनिट के अंदर टॉपिक्स है vulnerability के ऊपर है, ठीक है, और vulnerability को आपको समझना जरूरी भी है जो आगे की यूनिट्स में आएंगे. So it's very important for you to understand vulnerability into a very different part. Okay. Let's go ahead. As I always tell you, before going into the lectures and all, we have to understand few points, few words. जो वर्ड्स हमारे लिए पूरे यूनिट में यूज होने वाले हैं, उन वर्ड्स को स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट में क्लियर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उन वर्ड्स को क्लियर कर लोगे तो वो वर्ड अगर आप कहीं पे भी यूज करोगे, इवन दे आर कमिंग इनटू अ tilted in the questions, you would be able to understand the questions and unit बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. आप कहीं पे भी रुकते नहीं हो पीछे करने के लिए कि अच्छा पीछे जाके एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या था, because in the first only you are very clear what is the meaning of the words. All right, let's go further and understand with the words. Biological hazards. What are biological hazards? With the word biological and with the image, I think it's getting very, very clear to you what are hazards of biological. So something which is biologically connected. Processes of organic origin or those conveyed by biological vectors, including exposures, different microorganisms जो एक exposures होते हैं, फटने वाली चीजें होती हैं, explode हो जाती हैं, which may cause the loss of life or injury or property or damaging properties, social or economical, environment also, environmental degradation, which are doing all these things are biological hazards. For example, it has given epidemic diseases that there are plants and animals, you can know, insect, there are plagues, or you can say diseases which are biological. Okay, biological, you always on with the word only you would be very, very clear. Biological, something is diseases or insects related, animals or plants related, right? I think that's clear. Let's go to the other word, geological hazards. अब geological hazards क्या होते हैं? Geological hazards include internal earth process of tectonic or origin, such as earthquake, tsunamis, volcanic activities, and emissions, as well as external process such as mass movement, landslide, rock slides, rock falls, or avalanches. Avalanches I already told you, right? Then surface collapse, geological hazards होते हैं जो inside the earth के अंदर, internal earth की जब हम बात करते हैं उनको हम बोलते हैं geological hazards. Geo, you know the word geological, right? It's a related to earth only. Geological location we say, right? Geolocations we say geostrategical political locations, right? When you are studying in political science, other subjects when you study, then you know geological strategies. These are very, very important and they are internal. They are internal, the earth part. Then geological hazards can be single or say combined of their own or effects. अभी geological आपका देखा जाए तो ये बहुत उस तरीके, ये एक ही नहीं होते, they are combined. ठीक है, they are not only single or they are not only one, they are combined also. Okay, for example, floods, mud floods हो जाते हैं. Mud floods you must be knowing, right? Then cyclones, storms, thunder, rain, and windstorms, right? These are few geological hazards. I hope with that you are much clear that what are geological hazards. Let's go further and understand hazards and disaster. Now, what is a hazard and what is a disaster? Hazard defined, a hazard is difficult. It's very difficult for us to sometimes define hazard, and it's even difficult the differences. Is a minor difference जो दिया हुआ है hazard और disaster के बीच में, वो आपके लिए जब आप पढ़ते हो बहुत
बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए उसको डिफाइन करना, उसको समझना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम हजार्ड को पढ़ रहे हैं या हम डिजास्टर और हजार्ड के डिफरेंसेस को पढ़ रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से क्लियर नोट पे समझें। See, what is an hazard? If you see, the International Secretariat of Disaster Reduction has defined hazard as a potential damaging physical event. एक potential है उसके अंदर damage करने का physical event or phenomena of human activities that may cause the loss of life. That may, ये जो may word है ना, पूरे यूनिट में प्लीज इसको लिख लो अपने नोटबुक के अंदर। may, hazard means may, that may cause the loss of lives or injuries, property damages, social or economical losses, or environmental degradation. Hazard has both a natural and human made, right? दोनों होता है हजार्ड, दोनों चीजों से हो सकता है। विच में, जो कर सकता है एक चीज, हजार्ड कब है? हजार्ड उसको हम बोलेंगे दैट मे लेड टू अ लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ like damages to property and economical or social disputations, then environmental degradation। जो इस तरीके की चीजें कर रहा है हम उसको बोलेंगे, ठीक है? कि what is this? This is hazard. I hope the word hazard is clear. Let's go further and understand the other word, that's disaster. Now, what is disaster? Disaster cannot be like, the word we have used, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यूनिट 1 के अंदर कि डिजास्टर का जो मतलब है, जो वर्ड का मतलब हम शुरू से अपनी नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हैज बीन चेंज्ड, right? It has not been like that कि आप सोचो disaster is something which is something happening naturally, or man that naturally something is happening on a natural phenomena. It's not like that, but the disaster's scope has been changing rapidly from that time. So what is disaster? Seriously, disaster is something, the functioning of the society which is disturbing the functioning of the society and human, it's leading to a human disturbance, the settlement disturbance. That's disaster. For example, we'll be also looking into one of the example of chemical factories, but let me give you an example of that one only. If in case एक पूरे एरिया के अंदर केमिकल फैक्ट्री लगी हुई है, उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखें, उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर केमिकल वर्क, फॉर एग्जांपल हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी का मैंने एग्जांपल हमेशा आप लोगों को दिया है। तो वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, वो एक ऐसी जगह लगा हुआ है जो सिविलाइजेशन के बहुत पास था, राइट? एंड इट हैज लेड टू दैट द रेलवेज के बहुत पास था। उसके अंदर जैसे ही लीकेज वगैरह हुई, तो वो एक डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो गई। क्यों? बिकॉज इट हैज लेड टू अ देयर वाज अ हजार्ड इन दैट, कि हाँ वो मे बी कैन लेड टू अ डिजास्टर, बट इट डिडंट हेल्ड एज अ डिजास्टर अंटिल जो लीकेज हुआ उसके बाद, राइट? सो ability of affected people to cope up using their own resources, कि उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, लोगों के पास जितने रिसोर्सेज हैं, उतने रिसोर्सेज से बियॉन्ड सिचुएशन जब चली जाती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए, या वहां की लोकल लोगों के लिए उस चीज को कॉप अप करने में, राइट? आई होप दैट्स क्लियर टू यू। Let's go further with the other word, that's hydrometeorological hazards. What are these hydrometeorological hazards? These hazards are of atmospheric, okay, atmospheric, hydrological or oceanographic, ठीक है, oceanographic. So these are hazards including floods, mud floods, tropical cyclones, थंडर एंड स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, उसके बाद आपका हो गया ड्रॉट हो गया, टेम्परेचर एक्सट्रीम चला गया। तो ये उस तरीके के हैं जो आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है तो वो आपका उससे रिलेटेड नहीं है, वो एक ही तरीके का क्या कहते हैं डिजास्टर लाइक, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन एंड अ सिंगल, मैंने बोला हमेशा से कॉम्बिनेशन भी रह सकता है और सिंगल भी इफेक्ट कर सकता है, राइट? बिकॉज कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमने शुरू से पढ़ा है यूनिट 1 से, कि एक अर्थक्वेक कैन लेड टू अ लैंडस्लाइड एंड अ लैंडस्लाइड कैन लेड टू अनदर डिजास्टर्स। सो ये इस तरीके की चीजों में, इस तरीके के कॉम्बिनेशन के अंदर देखा जा सकता है।
I hope the word is clear and till now everything is clear. We are very fine. अभी हमने 4 to 5 वर्ड्स पढ़ लिए हैं और हमें ये वर्ड्स अब जब भी हमारे यूनिट के अंदर यूज होने वाले हैं, वी आर वेरी क्लियर व्हाट आर दे. स्टार्टिंग में उसने हमें हजार्ड और डिजास्टर के बीच में जो एक पतली सी लाइन है जिसको हमें समझना है कि इसे डिजास्टर कहेंगे और इसे हजार्ड कहेंगे, वो उसने अभी से ही हमें क्लियर कर दिया. राइट, लेट्स गो फर्दर. रिस्क. Risk is explained as the livelihood or probability of loss. Probability. Probability, you must have been studying in maths. There's a full chapter on maths of probability, right? And that's very, very simple. And you know, it's very interesting for students to learn. Why? Because probability of loss. वो एक प्रोबेबिलिटी हमारे लॉस की, रिस्क जिसे हम कहते हैं. अब आपके अगर आप बिजनेस कर रहे हो, यू हैव टू टेक दैट रिस्क. ओके, until unless you take the risk, you won't be able to getting that profit. Risk nahi to profit bhi nahi. A person who takes risk can earn more. So risk could be, you know, that, for example, game of boxing or, you know, bullfighting, which is unforeseen. ओवर हेयर दिस ट्राइंग टू से अनप्रिपेयर्ड. जो चीज कुछ भी अनप्रिपेयर्ड है या कोई भी एक ऐसी चीज जो मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल अनही प्रिडिक्टेड कह सकते हैं आप जिसे, तो उस टाइम पे इस वर्ड का है कि वहां पे रिस्क ज्यादा है. द वर्ड इज एम्प्लॉयड इन जनरल यूज्ड एज ऑल्सो टेक्नोलॉजी यूसेज and whereby it denotes the extent of likely the damage or the hazard potential of the particular event. Right? उसके कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ना, ये हजार्ड के पोटेंशियल को भी अगर आप देखो तो बताता है. लाइक डैमेज ऑफ अ हजार्ड पोटेंशियल, की भाई फैक्ट्री में से केमिकल निकलेगा तो कितना नुकसान होगा, कितना रिस्क है इसमें, वो चीज भी इसका कनेक्टेड रहता है. Right, how hazard and risk are connected. Let's go further and understand. Now, if we go into the introduction, it's very clear to you what is introduction. Like, you know, जो starting का हम समझने वाले हैं एक टॉपिक के अंदर, that's the introduction part. So, unit 2 के अंदर risk हम पढ़ रहे हैं, hazard हम पढ़ रहे हैं, and वनरेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं. तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत क्लियर है कि अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, दो जो यूनिट को हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से इंट्रोडक्शन में तीनों को कनेक्ट करते हुए लिख रहे हैं. When you're writing an introduction in a question, you need to mix all the 3 parts and write them connectingly. Like 20th century, the theory and the practice of disaster management has been denoted by a scientific perspective, and thereby disasters were thus of purely as a geological or a climatical problem. पहले वो कह रहा है इंट्रोडक्शन के अंदर कि पहले क्या था, पहले में अपना जो भी हमारा डिजास्टर रहता था वो हमारा या तो एटमॉस्फेरिक रहता था या फिर हमारा जियोलॉजिकल क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम से रहता था. द सॉल्यूशन ऑफ विच लेज इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंस, जिसका सॉल्यूशन इंजीनियर और मैनेजमेंट साइंस के अंदर था. But in the last 2 decades, there has been a pragmatic shift in the understanding of disaster per as the human factors. अब जब से हम लोग 1-2 डिके पहले से वो ये बोल रहे हैं कि there has been a there are pragmatic changes, एक pragmatic shift हो गया है in the understanding of disaster. Disaster के understanding में as the human factor has been arrived. Right, so now negligence, जो कि आप देख सकते हो कि which has been neglected, जो neglect जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है. Presently, the term disaster is not more exclusive concept in that it includes man-made and technological hazards, as also terrorism, which has added a new dimension in its understanding. टेररिज्म हो गया, जो भी बहुत सारे ऐसे हजार्ड्स हो रहे हैं जो एक नए तरीके का डायमेंशन एड ऑन कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में. राइट, नाउ इफ यू सी एन इवेंट, वेदर if an event, whether a product of a natural natural phenomena or human activity turns out to a catastrophic disaster, if the community of the society fails to advocate, cope up with it, that's natural disaster,
डू नॉट नेसेसरी लेड टू अ डिजास्टर। एक नेचुरल डिजास्टर जरूरी नहीं है डिजास्टर में ही बन जाए, क्योंकि वो हो रहा है, वो नेचुरली हो रहा है। अभी लैंडस्लाइड हुआ तो वो जरूरी नहीं है विल लेड टू अ डिजास्टर ओनली, बिकॉज इफ पीपल डाइड इट्स अ डिजास्टर, और इट्स एन एक्सीडेंट when things has no one has died, right? Which has been I'm telling you since long time. Okay, now let's go further and understand. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, there are two important prescriptions on disasters. According to one school thought, एक school thought से आपने समझा कि disaster are natural, revengeful acts of nature, an opportunity for men to alone for their sins, which died were in death and destructions inevitable. लेकिन as per the other prescriptive disasters are man-made and events which are product of natural phenomena or human activities turned out of a catastrophic disaster. ये दो तरीके के प्रिस्क्रिप्शंस की बात कर रहा है यहाँ पे. देन अगर हम और अच्छे से देखें तो डिजास्टर सोशियोलॉजिस्ट कार 1932 में हैज endorsed to understanding disaster in terms of social activities. उसने डिजास्टर को in terms of social activities के बारे में चीजों में दिखाया है. Right. Now, Carr indicates that disasters are the collapse of cultural protection, a result of human activities and not of natural or supernatural forces. उसका साफ कहना है कि ये मैन मेड ज्यादा है, मैन मेड है रेदर देन दैट सुपर नेचुरल थिंग. यू कैन नॉट टेक दैट सुपर नेचुरल थिंग. ओके, लेट्स गो फर्दर एंड अंडरस्टैंड मोर. Earthquake, flood, cyclone are natural hazards which cause large-scale losses of life, property when the triggered mechanism is activated. Risk is a technical concept. अगर आप देखो कि hazard क्या है, hazard है which cause a large-scale loss of life. एक लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ जब हो रहा है, उसको हम जब वो ट्रिगर कर रहा है उस मैकेनिज्म को, दैट्स hazard. But risk क्या है is a technical concept which is used by engineers and management specialist to arrive at a estimate of losses in the event. Risk वो है जो एक एलिमेंट है, एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो इंजीनियर्स और एक मैनेजमेंट यूज करती है फॉर अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट. ठीक है, कि क्या उसका रिस्क है. Vulnerability can be natural or man-made. Vulnerability can be natural or man-made, and it can be physical or owed to factors such as weak buildings. अब vulnerability क्या है कि हम चीजों को बचाने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस चीज को किस तरीके से समझ रहे हैं. Right? You're getting my point. Just give me a second. Yeah, we are on the topic over here. Okay, this has been included in this. No issues. Let's go further. We are now clear with the perspectives and what is happening. Okay. Now let us understand hazards. हजार्ड जब आप समझोगे, जब भी मैं ये स्लाइड पढ़ रही थी तो मुझे दिखा यही कि यहाँ पे हजार्ड और वर्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो उससे पहले हमने हजार्ड को पहले ही समझा है, डेफिनेशन क्या है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हजार्ड और डिजास्टर है क्या. तो हजार्ड की जब हम बात करते हैं वो एक पोटेंशियल है और वो मे बी वाली कंडीशन है. ठीक है, विच इज एक्टिवेटेड बाय व्हेन द राइट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फैक्टर्स, नेचुरल और मैन मेड, जब राइट वो चीज हो रही है, वो मे बी वाली चीज हो रही है, तो तब उस हजार्ड की हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अ केमिकल प्लांट, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल बहुत देर से दे रही हूँ. एक केमिकल प्लांट की हम बात कर रहे हैं. इन अ पॉपुलेटेड एरिया प्रेजेंटेड अ हजार्ड हैविंग अ पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब एक जो वो बात कर रहा है कि हजार्ड एक क्या करेगा. हजार्ड जब आप केमिकल फैक्ट्री देख रहे हो आप इतने बड़े एरिया के अंदर, तो उतने बड़े एरिया के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है कैन लेड टू अ बिग हजार्ड. वो कर सकती है उस चीज को. क्यों कर सकती है? बिकॉज इट इज इन अ एरिया विच इज गेटिंग वेरी वेरी डिजास्टरिक सिचुएशन. अभी लोगों के बीच में अगर चीजें होंगी तो डिजास्टर तो क्रिएट करेंगी. अगर वो एक ब्लैंक जगह पे है जहाँ पे दूर दूर तक लोग नहीं है,
तो वहां पे अगर कुछ होता है तो इट्स नॉट गोइंग टू लेड टू अ बिग डिजास्टर. A hazard technically is not a disaster unless the trigger is dead. यही लाइन मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ, hazard is not a disaster. वो एक डिजास्टर नहीं है जब तक वो उस चीज को ट्रिगर नहीं कर रहा है, या तो वो नेचुरल है या मैन मेड है. जब तक वो ट्रिगर नहीं कर रहा है वो एक डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, राइट? Let's again go into the like other point and understand disaster involving large scale loss of lives, properties. It is a sudden on-site event. वो एक sudden on-site event है on a large scale large enough to require outside assistance. जो outside उसे assistant चाहिए, एक large scale जो की problem create कर सकता है. Now we were on this slide and we were understanding that what is earthquake, and this is normal. earthquake natural है, risk क्या है हमने पढ़ लिया. vulnerability और risk की ये लोग जो बात कर रहे हैं, तो जो vulnerability हम किस तरीके से हम buildings को बना रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं कि हमारा loss बहुत कम हो. who lack to where the defending themselves in the event of disaster, कि वो अपने जो disaster के event में कैसे अपने आप को defend कर रहे हैं. Let's go further and understand what is hazards. अभी तो अंडरस्टैंडिंग हजार्ड्स पे थे हम ना, इसी के अंदर हमारा कुछ टॉपिक है हजार्ड. उसके बाद ये एवोल्यूशन की बात करेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन की बात करेगा, एंड प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ हजार्ड की बात करेगा. उसके बाद ये थोड़ा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हजार्ड्स बताएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड बताएगा. ये टॉपिक के अंदर ऊपर आइडेंटिफिकेशन जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट था उसके अंदर नहीं था, बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग. ओके, बट हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिकॉज द टॉपिक हैज लॉट ऑफ सब टॉपिक्स टू बी कवर्ड, राइट? और उन लॉट ऑफ सब टॉपिक्स के अंदर आपको चीजें बहुत अच्छे से, मैंने पॉइंटर्स हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. सो हजार्ड्स आर वेयर extreme geological events, biological processes, and major technological accidents are taking place. Then a difference between hazard and a disaster is very important and crucial. Important है और crucial भी है. A disaster takes place when a community is affected by a hazard. होने वाली मे बी वाली सिचुएशन जब एक कम्युनिटी इफेक्ट हो जाती है तो हम उसको डिजास्टर कहलाते हैं. एन इवेंट दैट एक्सट्रीम्स द कम्युनिटीज कैपेबिलिटी टू कॉप अप. अब कम्युनिटी की कैपेबिलिटी है चीजों से कॉप अप करने की, अगर वो कैपेबिलिटी को तोड़ के कोई चीज बाहर निकल रही है तो वो डिजास्टर के अंदर आ जाती है कि लोग कॉप अप नहीं कर पाए. इन अदर वर्ड्स, the impact of disaster is determined by the extent of community's vulnerability to the hazard. वो उस तरीके से कैसे आप चेक करते हो कि क्या कैपेबिलिटी है उनकी, क्योंकि जो वर्नरेबिलिटी हजार्ड के साथ कम्युनिटी की थी, द वर्नरेबिलिटी इज नॉट नेचुरल, वो भी मैन मेड है. वो कैसे मैन मेड है कि जो चीजों को कॉप अप करने की सिचुएशन वो इंसान ने तो बनाई है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो कैसे हम उससे बचेंगे. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. There's a picture which I have made a little on a single slide ताकि आपको एक टेबल में क्लियर हो जाए. पेपर में जब आता है तो एक टेबल में क्लियर करने से चीजें बहुत अच्छे से हमारे जो एग्जामिनर हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर चेक करने वाले हैं, उनके लिए इम्पैक्ट अच्छा जाता है. Hazard, disaster. Hazard and disaster are disastrous situation that poses a threat to human life, then an event that completely cause damages to human lives and property. Then if you see hazard and disaster, then has lost critical consequences, and whereas disaster has and more catastrophic, has more critical consequences and more catastrophic, then take its full shape after a series of events. बहुत सारे events के बाद एक अपना पूरा shape लेता है hazard. अगर often हम देखा जाए तो disaster happens in a short term and it's a causing more severe effects. वो एक मोर सीवियर इफेक्ट्स डालता है. आप ये टेबल लर्न कर सकते हैं, इसको आप अगर पेपर में के टाइम पे जस्ट उन पॉइंटर्स के रूप में बना देते हो, इफ अ क्वेश्चन इज कमिंग ऑन डिजास्टर एंड हजार्ड, इट्स रियली वेरी इम्पैक्टफुल. Let's go further and understand observation and prescriptions of hazards. It's in sudden on-site thing. Okay, then it's written also ki what are that? Earthquake, tsunamis, and flood, volcanic eruptions. Then slow ऑन-साइट हजार्ड्स कौन से होते हैं? इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गए जैसे कि ड्रॉट, देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो धीरे धीरे हो रहे हैं. इंडस्ट्रियल हो गए आपके सिस्टम फेलियर, एक्सीडेंट हो गया, एक्सप्लोजर्स हो गए, फायर हो गया. वॉर एंड सिविल स्ट्राइक्स में आप देख सकते हैं
एक्सेशन हो गया, देन टेररिज्म हो गया, एंड अदर एक्टिविटीज लेडिंग टू डिस्प्लेस पीपल, रिफ्यूजीज बना रही है। पेंडेमिक आप देख, सॉरी एपिडेमिक आप देख सकते हो कि जो जिस तरीके से फूड से या फिर डिजास्टर से, डिजीजेस से आपका आ रहा है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। लेट्स गो फर्दर। This was a big topic of observation, but I have made it short for you people to make it, that clear to understand. पॉइंटर्स में अगर आप लिख देंगे, अच्छा ऑन साइट पे ये है, स्लो साइट पे ये है, इंडस्ट्री पे ये है, मेडिकल पेंडेमिक में ये है, आप इसको बस 5 पॉइंट्स के अंदर टिप्स पे अपने लर्न कर लो, बहुत इजी होगा आपके लिए आंसर को लिखना और फिर मार्क्स गेन करना। डायरेक्ट हजार्ड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट हजार्ड्स क्या होते हैं, ग्राउंड शेकिंग एंड सॉइल लिक्विफिकेशंस, देन इमीडिएट लैंडस्लाइड्स हो गए, मड स्लाइड्स हो गए, परमानेंट ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स, ये इस तरीके के डायरेक्ट हजार्ड्स हैं। बट अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए तो पॉल्यूशन हो रहा है, डिलेड लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, डैम फेलियर्स हो रहे हैं, ये बहुत इनडायरेक्ट वाले हजार्ड्स हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, बट चीजें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो रही हैं, डायरेक्ट नहीं हो रही हैं। Then there is one more difference I have mentioned over here, ताकि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का फर्क समझ में आए, ना कि वो कंफ्यूज कर जाए। तो losing distinguished between the, there's a losses distinguished between the immediate and delayed loss as a result of disaster. Delayed और immediate का जो डिफरेंस है उसको बता रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि जो इमीडिएट होता है वो डायरेक्ट है, जो डिलेड में होता है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा फॉर्म है जिस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। Let's go further. Now we have come to the next subtopic of understanding hazard, that's identification of hazard. ठीक है, let's understand. Identification of hazards involve analysis of scientific data to trace the casual paths of events led up to the disaster. For example, identifying कि वो chemicals causing water pollution, their sources, impact on specific elements such as human health, etc. अब आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो हजार्ड्स को, उसके बाद फ्लड हो गया जैसे कि विच कॉज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, तो किस तरीके से किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो चीजों को। हजार्ड्स एनालिसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ स्लो ऑन साइट डिजास्टर, जो कि एक स्लो ऑनसेट डिजास्टर को हम कैच करते हैं, पोल्यूशन है, हम कैसे उस पर चीजें कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक हजार्ड ही है ये, लेकिन इनडायरेक्ट है, तो अभी हम उसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो further and understand. Hazards are to be short-term duration. Most of widely recognized hazards are earthquake, volcano, weather conditions. These are there. Then comes another group of hazard is created by the actions of human beings. Pollution of water हो गया, fire हो गया, ये सब चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। अदर मैन मेड हजार्ड इन्वॉल्व्स ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स आपने देखा, ये जो पेस्टिसाइड्स पे भी हमने देखा, ये जो एक तरीका नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैन मेड हजार्ड्स वाली सिचुएशन है। फ्लड्स फॉर एग्जांपल मे बी रिजल्ट इन ओनली कंसर्न ऑफ पॉलिसीज, जो कंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस इज व्हाट वी हैव फुल्ली अंडरस्टैंडेड अबाउट हजार्ड्स। अंडरस्टैंडिंग हजार्ड के अंदर आपने पढ़ा हजार्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हजार्ड्स क्या होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ हजार्ड्स क्या होते हैं, राइट। I think it's very crystal clear to you that what is hazard. Let's go to the other topic, that what is risk. Understanding risk is defined by international strategy for disaster रिडक्शन। अभी हम जब यूनिट 3-4 आगे कवर करेंगे तो वहां पे हमारा पूरा एक यूनिट जो है टोटली आपके क्या कहते हैं इन उनके ऊपर बात करेगा कि किस किस तरीके की आपकी प्रोटेक्शन डिजास्टर के अंदर हेल्प करने वाली या चीजों को ठीक करने वाली यूनिट्स हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपर वो उनकी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म, जैसे इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ISDR एज द, उसने डिफाइन किया है कि रिस्क होता क्या है। तो अभी हम इसको ना पूरा प्रॉपर अच्छे से आगे वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सेप्टेड लॉसेस
deaths, injury, property, or livelihood, economic activities, or environmental damages resulting from interactions between natural or human indicated hazards and vulnerable conditions. जैसे आप देख सकते हो कि रिस्क क्या है, हजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, राइट, कि हजार्ड कितना है और फिर देखते हैं हम हमारी वल्नरेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और उन दोनों को एक उसका क्रॉस करने के बाद हमें पता चल रहा है, उनको इंटू करने के बाद हमें पता चल रहा है कि रिस्क क्या है, राइट। रिस्क कंटेन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सेप्टेड लॉस, which I am already telling you, right? Let's go further and understand more detail that what is risk assessment and evolution. I'm really sorry, the vulnerable word is again and again coming because it's an important topic. So I have properly put it the word over here and a lot of things so that it gets very, very clear to you that what is vulnerability. Risk assessment and evolution. Risk assessment is defined as the methodology to determine the nature and extent of risk by analyzing potential hazards and evolving is a kind of a condition or of vulnerability that could pose a potential threat or harm to people. ठीक है, अगर आप इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो सच असेसमेंट हैज सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग। इसको करने के लिए भी प्रॉपर चीज आप देख सकते हो, डिजास्टर रिस्क कितना है, फंक्शंस आप देख सकते हो इनटू एक्सप्लोजर हमारा जो है हजार्ड है, और हमारा जो भी हमारा वल्नरेबिलिटी के अंदर है, वल्नरेबिलिटी जितनी भी है हजार्ड जितना है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी जो कॉप अप करने की हमारी जो क्षमता है वो कितनी है हमारी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से देखिएगा वल्नरेबिलिटी को। Now, to reduce disaster risk, it is important to reduce the level of vulnerability and to keep exposures as far as away from the hazard as possible by relocating population or property away from the hazards prone zone. हजार्ड्स प्रॉन जोन, तो वो जोन के अंदर से अगर जब तक लोग हटेंगे नहीं तो तब तक तो हमारी जो हजार्ड की सिचुएशन है और जो हमारी रिस्क जो हमारा है वो नहीं है। देखो ये एक पैराग्राफ जो एक वर्ड पैरा आपको देखा उसके अंदर किस तरीके से यूज किया गया है। रिस्क प्रिस्क्रिप्शंस आपके क्या क्या हैं, देन अंडरस्टैंडिंग एज अवेयरनेस ऑफ रिस्क, देन एक्सप्लोजर्स हैं, फेमिलिटी हैं, डेथ्स हैं, हॉरर ऑफ डिजास्टर्स हो गए आपके, देन प्रिवेंटेबिलिटी है, किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, विच लेड टू अ डिजास्टर माइग्रेशंस, ठीक है। तो वो चीजें हो रही हैं बट हम उनकी चीजों से कैसे बच सकते हैं। Identification, if you understand the identification of risk, then it would be the political representation. Informal do risk assessments are as a part of daily governance, which used to justify legislation in foreign policy, the judicial system, law enforcement, etc. Risk assessments are now being conducted in more historical ways, so that in a particular field of event जाके हम चीजों को अच्छे से समझ पाए, उनका रिस्क का एक आइडेंटिफिकेशन हम कर पाए। रिस्क इज रूटेड इन कंडीशन ऑफ फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल vulnerabilities that needs to be assessed and managed on a continuous basis, right? I hope with this the risk is very, very clear to you, because it's very important for us to go layer by layer. It should not be we should be going very straight away to the topic and complete it. No, when we are going into the topic, it's very important for us to understand the topic and go into the topic by steps. So जैसे हमने अभी समझा कि अंडरस्टैंडिंग हजार्ड्स क्या होता है, उसके अंदर हमने टॉपिक्स पढ़े, सब टॉपिक्स, ऐसे ही हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क क्या होता है और उसके अंदर हमने सब टॉपिक्स पढ़े। Am I clear? All right, let's go further. Understanding vulnerability. Vulnerability gives the extent to which a community is affected by a disaster. It involves the measures of reliance and coping capability of community in the face of adversity. Okay, then resilience and copying capability develops over time as a result of private governmental policies. The process of vulnerability has been evidenced as proceeding along phases as root cause, dynamic problems, which are a result of priority decisions making in governments related matters.
over time. Okay, for example, drought is in a dry land areas led to famine in the absence of disaster migration efforts. ये बहुत ज्यादा आपका कनेक्टेड है वर्नरेबिलिटी उसके साथ क्या कहते हैं गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज ड्रॉट होता है, लोगों को, किसानों को प्रॉब्लम्स होती है और चीजें बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं. Now let us go into the next topic, like the subtopic of vulnerability, and understand. Vulnerability identification. Vulnerability identification is vulnerability, already has been defined as the condition determined by physical, economical, social, or environmental factors or processes which increase the, the capability of the community of hazard. Then vulnerability identifies, implying examining the root cause of vulnerability, that cause in the technological, physical, or social economical condition, addressing the same through empirical research or policies. एक जगह की कंडीशन को कैसे समझा जाता है, उस जगह पे रिसर्च करके. Vulnerability is defined as the condition determined by the physical and the understanding of that root. Let's go further and understand टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी. अगर आप टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं that there are social vulnerability, ecological, organizational, educational, then motivational, then cultural, physical. So there are different kind of vulnerability. And what are the natures of them? Let's start social vulnerability. Disintegration of local institutions and structures. Then we have geological degradation of environment, invertibility. मतलब किस तरीके से चीज को अच्छा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उस चीज की vulnerability पे बात की जा रही है. Vulnerability and the risk assessment, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है. अंडरस्टैंडिंग vulnerability हमारा खत्म हो गया है, because when we are going into the next topic, that's talking about vulnerability and risk assessment. अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग vulnerability खत्म हो चुका है. ठीक है, I think no one is getting confused and we are going well, right? Let's go. Risk assessment is an investigation into disaster phenomena through detailed study and investigations of repeat events over time, such as flood or that earthquake, assessments of damage and estimates of future losses possible in the absence of disaster migration measures. Okay, then if we look into vulnerability assessments, is a subset of risk assessments which analyze differential vulnerability of community in differential areas of industrial disaster impact. इस चीज को समझेगा कि vulnerable assessment क्या है, वो सबसेट ऑफ रिस्क है असेसमेंट का, which analyze a differential vulnerability. वो एक डिफरेंशियल वर्नरेबिलिटी को एनालाइज करने वाला ऑफ कम्युनिटी इन डिफरेंशियल एरिया ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट, कि डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या रहा. अब वर्नरेबिलिटी एनालिसिस entitles as assessing the loss of life and property from a particular hazard, एक particular hazard पे. For example, a number of people are expected to be killed and property worth by disaster if a cyclone strikes with strong wind at 130. कहने का मतलब कि उन्होंने एक एनालिसिस निकाल लिया कि इतने लोग मर सकते हैं और प्रॉपर्टी को इतना डैमेज हो सकता है अगर साइक्लोन आया इतने किलोमीटर पर आवर का. समझ रहे हो कि किस तरीके से वो उस चीज का एनालिसिस निकाल रहे हैं. नाउ vulnerability factors, please understand vulnerability factors are very very important. If you're going into this vulnerability factors, जो भी आप 5 I think 4 to 5 factors हैं उनको ध्यान में रखें, अच्छे से इनके ऊपर आंसर्स भी लिखें. For example, let me show you. The factors are population displacements, then urbanization, then gender, then economic factors. I think, yeah, geological factors. Now it's done. So this is the, these are the factors of vulnerability, which are very, very important. Please try to understand this, because if you let this to, skip, then it won't going to, answer framing. It won't go to a good answer framing. Now, concept of vulnerability covers risk of hazards and the measure of risk combined with the related invertible. ये line बहुत important है. Inability to cope up with the resulting stress. एक vulnerability क्या है? Vulnerability is covering risk of hazards and measures of risk combined with the relative
inability to cope up with the resulting stress. ठीक है, resilience और reliability की इसने reliability की इसने बात करी है. Resilience means is the measure of rate of recovering from a stressful experience, and reliability on the other hand reflect the frequency with which the protective device against hazard fails. ठीक है, let's go into the factors of vulnerability and understand. Population displacement is both are caused or a consequences of disaster. ये cause भी हो सकता है और एक consequences of disaster भी हो सकता है. There is an evidence of correlations between poverty and economical inequality, right? Then phenomena is both observed in poor third world countries and whereas the poor migrates also. ठीक है, किस तरीके से they are getting population displaced. Now let's go further. Urbanization is rural to urban migration has led to an unmanageable urbanization, and urban congestion has a forced human and physical capable extent to high risk zone, and consequently loss of potential of hazard has given up. So यहाँ पे ये कह रहा है कि कैसे लोग इधर से उधर जा रहे हैं और जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रहने में. Globalization has also contributed in many ways to increase the vulnerability of urban poor, to create uncertain conditions regarding employment through the obvious impact seems to be betterment of life or better opportunities. Globalization आया, betterment opportunity के लिए लोग भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ये situation create हो रही है. Gender is very, very simple. If you look into this, that gender based vulnerability is an acceleration over time which causes disempowerment of women in social, economic and political spaces, right? Gender की equality in social, economic and potential phases, political phases पे इसने बात करी है, जो हमारे लिए बहुत important है, right? Gender is very important in all the perspective, if you say. Economical factors, close correlation has been evident between the poverty, disaster and environmental degradation. As a result, as you can see, United Nations estimate that there has been a developed countries shows low physical exposures to hazards, whereas a greater number of casualties. So इस चीज पे हमारा work करना बहुत important है. Now geographical factors, see the global, that people's global warming, that you can see the global warming threats to agriculture in development countries. The most greenhouse gases are there. Then we have global warming has particularly increased the vulnerability of coastal areas, especially in the small islands, which has been affecting a lot. तो ये एक और फैक्टर है हमारा. ये सारे फैक्टर्स को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. इसके अंदर पूरा पैराग्राफ आपके यूनिट में दिया हुआ है. सो इफ आई वुड हैव रिटन फुल पैराग्राफ देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर अप, राइट? सो मैंने इसका गुड पॉइंट्स और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करते हुए लिख दिया है, ठीक है? बट व्हेन यू आर रीडिंग द प्रॉपर लाइंस so that it gives you a good understanding. Once you are done with the lectures, read the notes and it would be very clear with you. Okay, these are the questions. Risk is important, factors of vulnerability is important, and the meaning of hazard is very, very important. So please look into these questions and few more questions in the unit so that it's clear to you that what is done in the unit. Now let's conclude our lecture, and in the next lecture we'll be meeting up. Let me conclude this lecture. Shift of disaster response to a risk reductions has opened to an area of exploratory research in the subject of disaster management. इसने एक और नया एक्सप्लोर कर दिया है चीजों को, एक एक्सप्लोजर दे दिया है कि कैसे उन्हें करना चाहिए. Vulnerability analysis seeks to import that input into the disaster management by ensuring timely preparedness on the part of people and institutional and governmental agent involved. Okay, then disaster management and administrative task for reduction of disaster through preventions, preparedness, if you can see,
ओके, विच इज कमिंग इनटू अ pragmatic shift, जो कि मैं pragmatic shift के आपको बहुत देर से बता रहा हूँ कि there has been pragmatic shift, right? Let's go further, and now has come to the ending part. Thank you, everyone. So in the next unit, what we are going to cover, we have done unit 1, the meaning and classification, unit 2, hazard, risk and vulnerability, and now unit 3, we are going to cover natural and man-made disaster on a deep down, क्योंकि हमने unit 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा है natural and man-made disasters को, but अब हमें deeply inside पढ़ना है सारे चीजों को अच्छे तरीके से, ताकि हम एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकें, right? Thank you everyone.